Hello viewers, welcome to an incredible new chapter in the world of business and innovation. VisionEx, brought to you by the dynamic minds of the Entrepreneurship Cell, Sri Aurobindo College, University of Delhi. I am Manvi Khera, and on behalf of my entire team, I am thrilled to welcome you all. We will dive into engaging conversations with the trailblazing entrepreneurs, industry experts, and thought leaders, uncovering the stories behind the daring startups, the strategies that propelled them to a great success, and the lessons they have learned along the way. Every episode is a masterclass in itself, so be ready to unleash your inner entrepreneur and embark on a transformative journey with the Entrepreneurship Cell, Sri Aurobindo College. Let's dream big and innovate fearlessly. Hello, everyone, and welcome to our podcast series VisionEx, started by the Entrepreneurship Cell of Sri Aurobindo College, University of Delhi. And this is our debut episode. And today, we have a very special guest on our podcast. He is one of the leading figures in the world of AI and cybersecurity. He is also a great inspiration for our young generation who are interested in pursuing their careers in AI and cybersecurity. Let me extend my warm welcome to Mr. Sunny Vaghela, the man who built a unicorn in just 3 months. Yes, you have heard it right. Mr. Sunny Vaghela and Mr. Paul Kapoor has incorporated Zyber365 in May 2023 and turned it into a unicorn in just 3 months. Mr. Sunny Vaghela is an ethical hacker and Indian entrepreneur. He is the founder and CEO at TechDefence Labs, co-founder and CPO at Zyber365. Welcome to this podcast, sir. Thank you, Manvi, and thank you, Aurobindo College, for inviting me for this podcast. Thank you. So we are very glad to have you here. Okay. So let's start by talking about your journey. Like, how did you started your career in AI, tech, and cybersecurity? So it's a very interesting journey. So I'm 35 now, and my journey started almost 17 years back when I was 17-year-old. When people were not knowing about what hacking is, the hacking word itself was considered to be a crime. I was the one whiz kid who was always spending good time on the internet, right? In those dial-up, I would say that era, and with 140 kbps, I was spending a hell lot of time on, the internet. My father, mother wasn't knowing what I was actually doing in my room, but interestingly, I was, the other side of the, internet. So when people are actually seeing the facilities on the internet, I was actually trying to find out the flaws, on the internet. So, finding out flaws on the website or finding flaw on, anybody's network, anybody's system is something that I used to do. But interestingly, because the word hacking itself was a crime, and there was a stigma around this word ethical hacking. So there was nothing like ethical attached to a hacking at that time. So I was never been open to my family. One day, very interesting thing happened. That's how I completed my 12th, and then I got an admission in my college. Interestingly, the interest towards hacking started because my email ID got hacked. That's how I got into this world of ethical hacking. I used to own certain communities, I would say that under the communities in the hacking, those you can say the community, and that's how my journey started on that. But interestingly, on the very first year, I wanted to establish, myself as a hacker in the college. So what I did was I did some sort of social engineering, some phishing attacks on, my colleagues or my fellow, the students on the same batch. And I was able to get the password of almost 30 to 40 people in the first year of that. The moment I got the password, I was able to demonstrate, to one person that I have other person's password. I can hack into somebody's email ID. I can hack into somebody's, those Yahoo, somebody's Gmail account and all.
Now, when you're doing that, you're basically being considered as a prime minister of the college. So, people started approaching you. People started talking to you about, hey, can you hack this? Can you hack this? Although I was not doing any wrong about it. But then I was always interested to find the flaws. So, in the very second year of my engineering, I found some flaws in SMS. So I was able to use, my phone and able to send an SMS from any number to any number of my choice. So I can actually use your number using my phone to send an SMS to any other number. That is being highlighted by a couple of media organizations. So the good part was that, a friend of mine was connected to a lot of media houses. He said that, Sunny, this is something very extraordinary that you've been doing. Why don't you just showcase it to media? I was like, okay, let's do that. So I just gave an interview with one of the news channel, and then almost all news channels started following. We want to cover you. We want to, we want to know how this SMS is being possible, or sending SMS from any number to any number is you making it possible. In just a seconds of time. So that has given me a stage where I was able to showcase the skills to the world. And that has given me a very great confidence also. But when you are in the second year, you're getting featured on some news channels, and then people start forgetting things, every 6 months. So they forgot what I have done, some commendable jobs, before 6 months. So I thought, why not to do something else? So I found some problems in the VoIP, that is a voice over internet protocol technology. So the thing I was able to do using SMS, I can make a call from any number to any number. So I can use your number, no matter you have your phone with you, you switched off the phone, or even the number is not working, but I can use that number to make calls from any number to any number. Again, that has been highlighted by certain of the media houses. So I was actually liking that feeling of, getting featured, right? And obviously, when you are 16, 17, you're obviously liking that feeling. The moment you enter the college, people would say that, hey, I've seen your video in some XYZ news channel. You've been demonstrating that. You've been, called upon a stage where you are presenting something in front of almost 500, 600 people. The whole batch of yours, including all the streams, like the computer, electronics, every of the stream people, they are sitting there, and you are actually, making your faculties listen what extra, ordinary things that you've been doing. So I always wanted to continue that. So, whenever any new thing is getting launched, I always used to find out some flaws into it, be it like Orkut. So Orkut was in the news, has been one of the very famous, the social networking website. So I thought, why not to find some problems into it? I found problems into it, and again, I got some internship opportunities. Even you'll be surprised to know this. Once upon a time, I thought of dropping out of my college, because the moment I got internship from Google, right, I said my mom, hey, I don't want to study now, anymore. Although I'm in my third year of the engineering, but I want to drop out and I want to, go to California, and do some internship over there. But obviously they forced me, they didn't allow me. They said that no, finish your engineering. There's an elementary thing that you need to do. We'll allow you to go for the masters and everything. So anyways, I didn't go, but I always wanted to do something or the other thing on that. But one day I got a call from a local investigating agencies saying that, hey, we want you to come to police station. I was like, why? They're asking me to come to police station. The moment I went there, they said that, Sunny, we saw that you hacked into some Orkut, and you are able to find out some people on Orkut also. You can trace also. If you can hack, then you can definitely trace as well. I said, yes. I thought they might have registered some case against me. But interestingly, the deputy commissioner of police said that, hey, the problem is that Ahmedabad does not have any sort of cyber cell. So why don't you help us setting up a cyber cell in Gujarat? So it was my third year of the engineering. I'm talking about 2007. And I was being asked to set up a cyber cell. So I said, show me the existing cyber cell. When I went there, I saw only there were like 2-3 computers, and nobody was knowing what exactly, the cyber crimes and the investigation is all about. So I saw a great opportunity over there, and I always tell, at many conferences that life always takes its own path. The opportunities are lying everywhere, but you need to grab the opportunity. So I grabbed that opportunity. I have set up the cyber cell. I started doing a capacity building for the Gujarat Police, initially.
and then different states police as well. So that's how my journey into the cybersecurity started. I got involved in 2008 serial blast that has taken place in Ahmedabad also. So the complete investigation from a cyber angle was done by me. Then 26/11 happened. Interestingly, that time the people were using phones, and they were getting calls from a VoIP. So obviously, the investigating agency has just called me upon saying that, hey, why don't you trace this? Because just 3 years back, you have showed us that there are flaws in this technology, and you have in and out of knowledge of the VoIP technology. So uh, I was asked to trace this calls from where they were originating, and who they are talking to, while they are attacking in Taj and the other, the Trident and the other part of the Mumbai as well. I was successfully able to do that, and that has actually changed my life because the moment I was back to Gujarat, I was awarded as the Rajiv Gandhi Young Achievers Award at the age of 20, as the IT expert, so that was one of the national award that has given me a great platform. And after that award, my life started into cybersecurity. So people started knowing about what I'm doing in cybersecurity, what new things that I'm doing in cybersecurity. And I'll tell you something, 90 motivation from the audience, So the people who are connected to you, people who are, the community people who are actually talking to you, they always used to ask me, Sari, what new things that you're doing? And the moment they ask me what new things that you're doing, that actually helps me to do something new, right? To help me to find some new problems. So finding out problems in Yahoo, then finding out problems in Facebook, or finding out problems in Microsoft. So that was actually keeping me motivated, and that's how my journey into the cybersecurity started. I worked with police for or the government of Gujarat for almost like 3 years. But later I realized, hey, this is not something that I want to do it for a whole life. So I left that, and then I started TechDefence. TechDefence is into existence for 11 years, but we are primarily a service company. So we are dealing into all set of cybersecurity services and the solutions. We are catering to almost like 400 plus brands that includes the enterprises, startups, SMEs, and we are getting to a lot of customers from the BFSI sector as well. But again, when you're doing something for almost like 10 years, again, you realize in your life that, hey, this is again, you've been doing something which is very monotonous, right? And your mind, which is so creative, wanted always to do something different. So apart from TechDefence, I was the investor. I am still an investor into a couple of startups. I into the cybersecurity space and into the AI space as well. But then I always wanted to do something big. So I met the team. We have formed the team almost like you can say that 1.5 year back, right? Although we are registered in May 2023, but the whole journey started almost 1.5 year back, right? So getting the right team, getting the right set of mindset, and having the right idea is, as I feel, is very important, behind the success for the Zyber 365, or the right valuations that we have justified to the investors for the Zyber 365. So that's how my journey started. I am still feeling that it has just started. I mean, even TechDefence, or even my cybersecurity journey has just started yesterday, and I'm still feeling so much energetic. And I don't feel like working, because I always tell people that follow your passion. So when you're following your passion, your work will never be a work, it'll be like a fun for you. So I'm enjoying it, and I'm sure that moving forward, we'll do something big, in the cyber and tech D, and cyber and AI, both the space as well. Yeah. That was really fascinating to know about your journey and how अपनी journey से ही आपने इतना सब कुछ establish कर दिया at the age of 17. एंड साइबर सिक्योरिटी ये सब जो भी थ्रेट है आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी को लेके आपने ये बैक 2007 में आपने ये फाइंड कर लिया. दैट वाज वेरी अमेजिंग टू नो सर. सो okay so sir, as we know that cyber security, AI and IoT, these are certain things जो कि as human people got confused with these terms. So how will you just define and segregate these terms in your own words? How will you describe these terms?
अगर मैं बहुत ही लेमन की लैंग्वेज में बात करूँ ना साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो इट इज लाइक कि आपका घर है, आपके घर में विंडो है, दरवाजा है, वेंटिलेशन है, राइट? सो इफ यू रियली वांट टू मेक श्योर दैट योर हाउस इज सेफ, कि आपके घर में कोई ना आए, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट ऑल दिस वेंटिलेशन, दरवाजा, विंडो, सब कुछ को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो साइबर सिक्योरिटी इज ऑल लाइक दैट, बट इन अ डिजिटल स्पेस. सो डिजिटल स्पेस में आपके ईमेल्स है, आपके सिस्टम्स है, आपके मोबाइल फोन्स है, आपके पास वेब एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारी चीजें यूज करते हो. आज सारी की सारी चीजों में आपका डेटा स्टोर होता है. एंड अगर वो डेटा किसी बैड गाइज के हाथ में आ गया, तो ही कैन एक्चुअली disrupt the organization. He can do any mess with an individual as well. So cybersecurity is all about protecting that data, protecting that information, right? And coming to AI. So AI is, in a simpler terms, I would say that it's more like, when we are thinking something, we make a decision. So like our brain instruct us to make some decisions, but now things are actually moving to machines. So we are actually programming the machine in a such a way that the machine takes a decision like a human. यानी machine human की तरह decision ले सकता है. मशीन जो ह्यूमन कर सकता है वो सारी की सारी चीजें मशीन भी कर सकता है. बट यस, मशीन को थोड़ा डेटा चाहिए, और डेटा कौन देता है? ह्यूमन देता है. तो एआई इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग दैट पर्टिकुलर मशीन टू थिंक लाइक अ ह्यूमन, एक्ट लाइक अ ह्यूमन एंड टेक डिसीजंस लाइक अ ह्यूमन. एंड अगर मैं दोनों की बात करूं, क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप है Zyber 365, वो एआई भी है, साइबर भी है उसमें यूज केसेस, बट हम उसका जो प्लेटफॉर्म है वो है Web3, दैट इज अ ब्लॉकचेन. सो आज पूरा जमाना जो है वो Web2 पे है. बट Web2 में बहुत सारे चैलेंजेस है. Web2 में चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंज है वो सिक्योरिटी है. और सिक्योरिटी क्यों चैलेंज है? क्योंकि आपका डेटा सेंट्रलाइज है, आपका कंप्यूटर में सब कुछ है. अगर किसी ने आपका कंप्यूटर हैक किया, अगर किसी ने आपका डेटा हैक किया, अगर किसी ने एप्लीकेशंस को हैक किया, तो सर्वर पे जो भी डेटा पड़ा है वो सारा का सारा डेटा ले लेगा. So we thought, okay, why not to create something on Web3, right? Which is useful for a business also, and which is useful for an individual also. So what we are trying to create in Zyber right now is we are creating, our own blockchain layer, which is on L0 and L1 layer initially, and using which businesses जो होंगे वो अपनी apps बना पाएंगे on a decentralized platform. एंड इंडिविजुअल के लिए मूविंग फॉरवर्ड इन 36 months फ्रॉम नाउ, हम लोग हमारी एक ओएस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका यूज करके आई प्रॉमिस यू, बिकॉज ब्लॉकचेन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी, दैट विल बी अ वेरी सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम which anybody can make a use and will actually reduce the chances of the system getting hacked or your data is getting hacked. So that's how we are doing it. रही बात दोनों की, साइबर सिक्योरिटी भी सॉल्व होता है, and how we are integrating AI. So certain decisions on the blockchains are also being taken by humans, right? So जहाँ पे हम AI को भी introduce कर रहे हैं, so that the machine takes a decision in terms of scalability, in terms of transparency, in terms of validating transactions, in terms of the interportability of the chains and everything. And this is what we are trying to create. I'm sure we are going to be the second company in the world who is taking this attempt to create the another OS in the world, and I'm sure we'll be successful and we'll be getting something for the world from India. Sure, sir, you will get successful in this. Sir, as हम AI का ज़्यादा यूज आजकल जैसे हो रहा है, एंड यू आर सेइंग कि हम वेब 2 में है अभी, एंड यू आर प्लानिंग कि हम वेब 3 में जाएं, जहाँ पे डेटा सारा डिसेंट्रलाइज्ड होगा. तो सर अभी जैसे हम AI की तरफ मूव कर रहे हैं, so do you think we can say cyber security will be a darker side of AI? I would not say cyber security is a darker side of AI, but rather I would actually reframe this in a very different way. कि अगर साइबर सिक्योरिटी और अगर AI अगर साथ में आ गया, तो I promise you that world will be a different world altogether. क्योंकि अगर AI का यूज करके आज देखो, it has all the pros and cons of it, right? So nowadays even attackers are also using AI for attacking it, for automating those attacks, taking some decisions whether the attacks are successful or not. But on the other side, अगर साइबर सिक्योरिटी और AI का राइट कॉम्बिनेशन किया गया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी अटैक हो रहा है, और अगर वो पैटर्न कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड हो रही है, और अगर वो
अटैक कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड होके पता चल रहा है, तो यू कैन एक्चुअली मिनिमाइज द सरफेस ऑफ द अटैक, यू कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द अटैक टू अदर कंप्यूटर्स, टू अदर सिस्टम्स, in just a seconds or in just a time. And that's how the AI is actually going to play a role. यानी वो अपने आप डिसीजन लेगा. अगर AI मानो तो सिस्टम्स में या तो सॉफ्टवेयर में आज जब इंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, तो वो बता देगा कि यार इतनी इतनी जगह पे अटैक हो रहा है और हमें इतने इतने अटैक को इतनी इतनी तरह से रोकना है. यानी एक जगह पे वायरस आया तो मैं मानता हूँ कि एआई का यूज करके, राइट, हम सारे के सारे कंप्यूटर को इंटीमेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा अटैक आ सकता है. अगर आप में ऐसा कुछ भी बिहेवियर दिख रहा है तो आप तुरंत ही आप ये एक्शन ले लेना, या तो सॉफ्टवेयर को बोल सकते हैं आप तुरंत ही एक्शन ले लेना. So I feel that it'll not be, I mean, it has its pros and cons, but moreover, if I look at a positive side of, the cybersecurity with AI, will definitely change the world. Thank you for explaining this in such a great and crisp manner. So, if we use cybersecurity and AI in a good way, so these both can proven as a good thing for India. Correct. Yeah. So, as you have mentioned in your journey that you have been honored by awards. So, can you please bring some light on the awards that you have been honored and inspire us? So there are a lot, right? But I think there are some few which are which I would like to actually mention. So मैंने जैसे बोला कि 2007 में I was actually awarded by the Rajiv Gandhi Young Achiever Award. वो उसका भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. जब मुझे अवार्ड मिला, जब मैं ये केसेस पे काम कर रहा था, जब मैं वापस आया, तो मेरी वेबसाइट है, मेरा खुद का पर्सनल वेबसाइट sunnyvaghela.com. तो वहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी ओपन किया, मुझे ईमेल आया था. तो मैंने बोला यार गवर्नमेंट से तो कैसे ईमेल आ सकता है, और मुझे तो थोड़ा समझ में ही नहीं आया कि इतना सारा अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट कर रहा है, ये कर रहा है. तो आपको थोड़ी टाइम की तो फेक लगता है कि ये फेक है. देन आपको आप उस नंबर पे कॉल करते हो, तो आप उस नंबर पे कॉल करते हो तो बोलते हैं कि सर आपका नाम नॉमिनेट हुआ है, गुजरात में से 3-4 लोग हैं, इनका नाम नॉमिनेट हुआ है और ये है. तो आई वाज लाइक वेरी मच अमेज्ड, और आई वुड से दैट आई वेरी मच आई वाज फीलिंग सो मच प्रिविलेज्ड दैट they have considered my name for such a big award. Second जो था वो है so by the Ministry of MSME, Ministry of IT, there was an AICTK association में they organized one of the national level awards where I was being conferred or the title which was given to me was the Indian Ambassador for Cybersecurity back in 2018. That has also given me a great chance because I got to explore a lot of countries with, the government delegations, some of the cybersecurity delegations of the government, and that helped me to expand the TechDefence, or I would say that my horizon or my presence into different other countries as well. Because what you are doing is you're going with government, you're going with, some government agencies, directly to different countries, and you got to meet a lot of people on that. Then the other award that I got was ET Industry Leaders 2021, in the cybersecurity category. So that is another award. And I think the last but not the least, which I want to mention, was a Times Group Award. It was the Times Man of the Year Cybersecurity was the another title that was actually given to me. But when I get any award, right, उससे but trust me on this part, आपका जो excitement होता है ना, वो excitement आपका थोड़े टाइम का होता है. आप जब स्टेज पे होते हो, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या तो कोई सेलिब्रिटी आपको कोई अवार्ड देता है, आपको फील होता है. द मोमेंट यू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, आपको थोड़ी देर तक अच्छा लगता है कि चलो बहुत सारी लाइक्स आ गई, मुझे इतने सारी कमेंट्स आ गई. बट अल्टीमेटली यू फील प्रेशर इनसाइड. दैट मीन्स यार कम्युनिटी आपको ट्रस्ट कर रही है, लोग आपको कुछ मान रहे हैं और आपको लोगों को कुछ देना है. सो यू फील लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, गिविंग बैक टू द सोसाइटी के मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ, what things that I can actually do to make this the people's life very easier. और सबसे बड़ा होता है कि अवार्ड जितने भी मिलते हैं ना, उसके बाद में मुझे बहुत सारे लोग ना मैसेज कर देते हैं. तो मैसेज क्या करते हैं, सर मुझे अपना करियर बात करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है, मुझे अपनी लाइफ में वो बनना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में वो करना है. मैं मानता हूँ अवार्ड से ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा खुशी ना उनको एक सही डायरेक्शन देने में मिलती है. अगर कोई मुझे बोलता है कि सर मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, सर मुझे ये फील्ड में इंटरेस्ट है, आप मुझे रास्ता बताओ ना. जब आप किसी को अच्छा रास्ता बताते हो ना, और अगर वो लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है, तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है. मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करता हूँ. जब ये जाइबर का न्यूज आया, हमारा इन्वेस्टमेंट का सब कुछ न्यूज पब्लिक हुआ ना,
एक बहुत ही अच्छा सा मेरा स्टूडेंट था 2010 में. ही इज नाउ वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट. 2010 में मैंने उसको ट्रेन किया था. उसने बहुत ही अच्छी तरह से नरेट किया है कि मेरे लिए जो सर का जो ये न्यूज़ है वो तो अभी आया कि चलो यूनिकॉर्न बने, वो टेक डिफेंस में सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, पर मेरे लिए तो यूनिकॉर्न है 2010 से. और उसने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि 2010 से मेरे लिए यूनिकॉर्न क्यों है, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में ऐसे ऐसी 5 चीजें बताई थी कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में करना चाहिए. कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे उन्होंने हेल्प की है इन टर्म्स ऑफ द राइट गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ द राइट डायरेक्शन. एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट ही इज यूनिकॉर्न फॉर मी सिंस 2000. और मैं बताऊं, आपको कोई भी विश करेगा, कोई इंडस्ट्री वेटरन विश करेगा, कि कोई सेलिब्रिटी विश करेगा, कोई भी विश करेगा, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा जो विशेष है ना, वो उसकी विशेष बहुत ही मैटर करती है, बिकॉज आपने किसी के जीवन में कुछ ऐसा किया that you made some difference in somebody's life, and that is what is more important, when you are actually working and when you become some example for some other people. श्योर सर. आप इस पॉडकास्ट के बाद भी आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस आपको लिंक्डइन पे और इन सब पे आपको टेक्स्ट करेगी, सर प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस. I'll be more than happy to assist you. Sure, sir. Okay. So, sir, how that you have started Zyber365 and you made it to a unicorn. So, success का क्या secret है, sir? Zyber365 and आपका क्या उसमें इतना होता है ना pressure, you said. सक्सेस का सीक्रेट एक ही होता है, और वो सक्सेस का सीक्रेट होता है दैट इज नोन एज अ राइट सेट ऑफ द स्ट्रेटजी, नंबर 1. एंड नंबर 2 इज कि आपकी स्ट्रेटजी और आपकी जो जो डायरेक्शंस है, या तो आप जो करना चाहते हो उसमें आप कितना हार्डवर्क देते हो, दैट इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो जाइबर वाज अ डिफरेंट स्टोरी फॉर मी. बट जाइबर के पहले मैंने 2018 से मैंने जैसे बोला कि मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में ऐसे इन्वेस्ट करना चालू किया था कि मुझे कोई भी अच्छा स्टार्टअप लगता था साइबर में और एटलीस्ट ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो मैं उसमें मेरा जितना टिकट साइज होता था, अगर उतना उनका मैच होता है तो ये तो मैच मेकिंग वाला डील होता है, तो वो मैच मेकिंग वाले डील में या तो मैं प्री सीड राउंड में जाता हूँ या सीड राउंड में जाता हूँ कि फाउंडर कैसा है और फाउंडर के उनकी टीम कैसी है. Zyber case was a little different because 1.5 साल पहले I met a team, right? So I met the team, I met Pearl, I met other people, and then we are actually discussing on how we can take TechDefence to another level. So that was another discussion altogether. So my founder comes from a different background, but he has a very good tech knowledge. So he comes from an investment banking background, but he's very blockchain, cybersecurity enthusiast. So he was already been, advising me on, TechDefence, on our investment strategy or on expansion strategy for a long time. So when I met him, I got that spark. यार कुछ तो हम कर सकते साथ में. But then, we met a couple of people because who are actually in other Web3, who are already doing something very successful in Web3, right? So अगर आप देखोगे मेरे CTO है Soneshwar, he is one of the very renowned name in the Web3 and a blockchain community. So होता क्या है ना कि अगर दो लोगों ने कुछ ठान लिया है कि नहीं हमें तो कुछ अलग करना है, हमें कुछ इमर्जिंग में कुछ करना है, right? So the Paul wanted to do something in Web3. I want to do something in cybersecurity, but although ultimately it's in tech, right? Then Soneshwar आया, then बाकी के team members आए, तो हमने अपना काम चालू किया. बट जब हमने चालू किया, हमने एक दो यूज केसेस बनाए. एक दो यूज केसेस बनाने के बाद हमें लगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वांट टू डू, राइट? क्योंकि ये तो कुछ इम्पैक्ट करेगा नहीं. ये तो क्या हुआ कि हमने एक चीज बनी हुई है और हमने उसको थोड़ा उसका एक यूज केस बना दिया. सो वी आर बिल्डिंग समथिंग ऑन अ टॉप ऑफ दैट, बट व्हाट वी आर नॉट बिल्डिंग इज अ प्लेटफॉर्म. व्हाट वी आर नॉट बिल्डिंग इज अ बेस ऑफ दिस. So why not we meet frequent, why not we discuss and why not we brainstorm some more ideas on that. So बहुत सारे ऐसे आइडियाज आने लगे कि जितने अटेम्प्ट्स जो हुए थे, राइट, जो हुए थे Web3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, राइट. सो वी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट था वो फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया था कि whether we can have or whether we can make this idea feasible or not. We got involved with some of our tech partners as well, some of the community people as well, and then finally we decided no, this is very much feasible and this is very much doable idea on that. And अगर हमें ये स्पेस में आना है और अगर हमें स्पेस में कुछ अलग करना है, then we have to get something which is extremely innovative,
and what somebody has not done, on a top of that. So that's how the idea, the whole journey of the idea started. Although we registered a company in May 2023, but जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि 1.5 साल पहले से इसका काम चालू हो चुका था. तो अगर आज भी अब आप हमारा रोड मैप देखोगे, हमारा व्हाइट पेपर देखोगे, तो वी हैव समथिंग कमिंग अप इन अदर 6 months ऑफ द टाइम, इन अदर 8 months ऑफ द टाइम. मानिए कि अगर मुझे ऐसा ब्लॉकचेन लाना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी कि कंपनी लॉन्च करके 6 months में दे गेट देयर ओन ब्लॉकचेन. बट यस, इट वाज अ वेरी थॉटफुल डिसीजन कि कंपनी को एक अलग लेवल पे ले जाना है और कंपनी को एक अलग चीजों पे ले जाना है. देन we should register our company late, so let's find some investors based on our existing companies, which are already registered, and let's start pitching them. सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कई लोग हमारे आइडिया पे बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये तो आइडिया कैसे हो सकता है, आपने ऐसे प्रोटोटाइप बनाया, बट आई डोंट थिंक सो कि दिस इज एक्चुअली डूएबल आइडिया. कोई अपने टेक पार्टनर से कनेक्ट कर लेता था, अपने टेक बंदे से कनेक्ट कर लेता था और बोलते थे कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है. कई लोग सुनते भी थे और फिर बाद में हम चाय कॉफी पी के वहां से आ भी जाते थे, राइट. बट हमने एक चीज डिसाइड किया था कि हम ट्रैवल बहुत करेंगे, मतलब हमें जहां भी मौका मिलेगा हम वहां पे जाके एटलीस्ट हम पिच करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है कि आपको अपने आइडिया पे विश्वास होना चाहिए, राइट. एंड यू टू मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि नहीं, दिस इज समथिंग which is very much possible. This is what we have created and this is what we are trying to do. Correct? क्योंकि आपने मान लिया, आपकी टीम ने मान लिया, उससे आपका काम खत्म नहीं हो जाता है. तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि सामने वाले को बनाना, राइट. एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट मैच मेकिंग. सो देयर इज एन इन्वेस्टर सिंडिकेट जिनका भी ये कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट था. वी वेंट विद दैट आइडिया. Then he helped us with a right set of valuations, right? कि पहले तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है. जैसे अगर मैंने बोल दिया कि नहीं, this is a unicorn, thing, right? This is what we are building, will definitely change the whole Web3 or the whole, Web3 with AI and cybersecurity. But it has to be understood by the people who are valuing it, right? And people who are really valuing it, they are one of the largest, the CA companies in London, right? So they're based out of London. So based on those, I would say that this future valuations, we got the right set of valuations. We got, the investor syndicate convinced on how, or what difference that we are making with this particular idea in Zyber365. And then finally, we signed the term sheet in 3 months after registration of our company on that. But yes, the story started 1.5 years back. It is not just 3 months of the story, but we registered a company 3 months back because we want to get into that categories of the fastest unicorn in this country. Yeah. It was really delightful to know this. Okay, sir, as we start a new startup or as we build a company or any startup we do, so there are some challenges जो हर एक early stage में startup face करता है. So please guide our, budding entrepreneurs or who are established entrepreneurs who have started their startup and they are facing some challenges. So how they can overcome their challenges कि मतलब demotivate ना हो जाए कि okay अगर हमारे पास challenges इतने सारे हम face कर रहे हैं तो startup ही बंद कर दे अपना. तो क्या ऐसे आप tips या कुछ information देना चाहेंगे? जो है ना कोई भी स्टार्टअप के लिए, वो तो अगर मानिए वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और अगर उन्होंने प्रोडक्ट बना भी लिया है, मैं बहुत सारे स्टार्टअप को फाउंडर्स को मिलता हूँ एंड आई आस्क देम वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट. दिस क्वेश्चंस अबाउट देयर प्रोडक्ट, their vision with the product, their plans with the product in next 2 years, next 1 year or next 5 years from there. सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कि कई सारे फाउंडर्स जो होते हैं ना, वो अपनी प्रोडक्ट तो बना लेते, मतलब उनको आइडिया मिला या तो आइडिया कहीं से मिला, राइट. अपनी प्रोडक्ट बना ली, उन्होंने सीड राउंड भी क्लोज कर लिया, एंजल राउंड भी क्लोज कर लिया, बट ये तो मैच मेकिंग है. अगेन आई रिपीट, कि किसी के पास है, आपको वो कैटेगरी में करना है, आपने फाउंडर देखा, फाउंडर अच्छा लग रहा था, हाँ फाउंडर कमिटेड है, ये आगे जॉब में नहीं जाएगा, नाउ प्लीज इन्वेस्ट इनटू दिस स्टार्टअप. बट द क्वेश्चन इज द कंसिस्टेंसी. तो बहुत सारे फाउंडर में जो वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप होता है ना, वो एक इट इज लाइक यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर राइड.
राइट? आज आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आज आपने बहुत सारे लोग ले लिए, राइट? आपने आइडिया बदल दिया, राइट? आपने अपनी प्रोडक्ट को कुछ और बना लिया, but it could be possible that tomorrow you might not have the same situation, the same access to the funding. So the thing is that you need to sustain in a good time and a bad time. So that is the first advice, you know. And second advice is you need to believe in yourself. जब आप अपने आइडिया पे खुद नहीं करते हो, राइट? मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को देखा है जो अपने आइडिया बना लेते, प्रोडक्ट बना लेते, बट जब इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो वो बाकी इन्वेस्टर्स के आइडिया पे चले जाते हैं। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे प्रोडक्ट बना, हमें ये प्रोडक्ट में ये करना चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट में ये एडिशन करना चाहिए। एंड एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट बन के आता है, द फाउंडर हिमसेल्फ इज नॉट हैप्पी बिकॉज उसका विजन ही उसके साथ अलाइन नहीं है। अगर आप वो विजन के साथ ही अलाइन नहीं हो, आपकी प्रोडक्ट आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो हाउ यू गोइंग टू सेल इट, हाउ यू गोइंग टू मेक इट बिग? So that is the second thing. The third thing is getting the right set of team members is a third challenge जो budding entrepreneurs face करते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आपकी कॉलेजेस में और आपके सर्कल में जितने क्लोज लोग होते हैं ना, राइट, आप जब भी अपना स्टार्टअप चालू करो या तो अपनी कोर टीम बनाओ ना, तो आप उसमें से थोड़े लोग लो। लाइक जब मैंने टेक डिफेंस स्टार्ट किया था तो मैंने वहीं वो क्लोज कम्युनिटीज में से, मेरे कॉलेजेस में से आज मैंने जो लोग लिए हैं वो अभी भी मेरे साथ है, राइट? क्योंकि यू आर एक्चुअली कनेक्टेड इमोशनली। आपको पैसा, इक्विटी सबसे ज्यादा होता है इमोशंस होता है। वो आपके साथ एक थॉट प्रोसेस को मैच कर पाते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस 12 साल पहले क्या थी उसको भी मैच कर पाते, अभी 12 साल के बाद क्या वो भी मैच कर पाते। बट आपने कोई you're getting somebody from nowhere, then the question comes is कि आपका थॉट प्रोसेस अभी तो मैच हो रहा है, बट 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, राइट? 12 मंथ्स के बाद क्या होगा? इट बी लाइक अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट? मैं मानता हूँ कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने चाहिए टीम में, आपको नए इनोवेटिव आइडियाज निकल के आते, बट इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं। द पीपल थिंक ऑफ शटिंग डाउन द स्टार्टअप कि नहीं, अब ये आइडिया नहीं हो रहा है, टीम मेरे साथ नहीं है। और चौथा होता है को फाउंडर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, अपना को फाउंडर ढूंढो। और मैं मानता हूँ ना, अपना को फाउंडर आपको ऐसा ढूंढना चाहिए ना कि जिनको टेक्निकल तो नॉलेज है। अगर आप अपनी स्टार्टअप जो भी कैटेगरी में बना रहे हो ना, वो कैटेगरी का तो नॉलेज है, पर सबसे ज्यादा नॉलेज होता है ना, दैट इज नॉन एज ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर उसको थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी का टच है तो मैं मानता हूँ कि आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा चलेगा। बिकॉज व्हाट यू अंडरस्टैंड इज द मार्केट एक्सपेक्टेशंस, व्हाट यू अंडरस्टैंड इज द कस्टमर साइकी। क्योंकि many a times you get the product in the market but the customer does not want it, या तो आप उनकी साइकोलॉजी को ही नहीं समझ पाए, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है आपका लेने वाला, then ultimately you build something or you are good for nothing or your product is good for nothing. So that is more important. और मैं तो कई बार स्टार्टअप फाउंडर्स को कहता हूँ कि एक बार ना आप शादी करते हो ना, तो वाइफ में आप देखते हो कि ये 1 2 3 4 5 क्राइटेरियाज होने चाहिए, बट आप अगर स्टार्टअप फाउंडर हो ना, तो आपके पास वो 100 क्राइटेरियाज का लिस्ट होना चाहिए कि मेरा को फाउंडर कैसा होगा, मेरा को फाउंडर इस तरह से होगा, क्योंकि दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मानिए कि आपके को फाउंडर ने छोड़ दिया और अगर उसका कमिटमेंट नहीं है, आई टेल यू दैट ये बहुत बड़ा उसके लिए डीमोटिवेशन फैक्टर होगा। एंड पीपल उसको उभर के आना और उसको अपने आप को ट्रस्ट करना, ये आगे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो द नंबर वन इज बिलीव इन योरसेल्फ। आई थिंक टू समराइज दैट, मैं थोड़ा स्पीकर हूं तो बहुत ज्यादा बोल लेता हूँ, राइट? Believe in your idea. Make yourself that your product vision for next 5 years has to be very clear, or the roadmap has to be very clear. Don't change because somebody else wants you to change. Understand your customer psychology. Get the right set of team members. Get it from the close circles, and yes, be very wise while choosing your co-founder. एक बार वाइफ गलत आ जाएगी तो there are always ways and means to do that, but अगर गलत आ जाएगा तो आपके लिए पूरी जिंदगी भर का आपको याद रह जाएगा कि this is exactly the thing, right? And you have to trust your team. So whenever you are delegating any work, you have to trust your team, and you need to make sure that you should be disciplined, hard work, and adhere to the deadlines that you give it to yourself. क्योंकि आपने मार्केट को डेडलाइन नहीं दी, अपने आप को डेडलाइन दी है। तो अगर आपने अपने आप को डेडलाइन दी है, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट केस। अमेजिंग सर। आई गेस इसके बाद जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो भी अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है,
बहुत इससे सीखेंगे एंड आई होप वो अपने आप पे बिलीव करें एंड अपने आइडिया पे स्टिक रहे. Correct. Okay. Sir, as per my knowledge, we are on the top of the world where the number of data breaches are increasing or high, we can say. Data breaches are very high. So, what are your views on this? A very simple view is data breach होते क्यों है सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए. So आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे है या तो जिस टेक्नोलॉजी पे है दैट इज अ वेब वेयर एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, राइट. आप एप्लीकेशन यूज करते हो, बैकएंड में आपका डेटाबेस होता है, वो भी सेम सर्वर पे या तो दूसरे सर्वर पे या तो इन अ टायर्ड आर्किटेक्चर, इन अ मल्टी टायर आर्किटेक्चर. अब क्वेश्चन ये है कि जो टेक्नोलॉजी सालों पहले से बनी थी, right? So the problem is with that technology or the architecture of the technology. I would not say the problem with the technology, but the architecture of the technology. The second thing is कि security mindset जो है, जो web to technologies के कोई भी developer है, like, right? तो जो security mindset है ना, वो उनका है ही नहीं. Because 90% of the people वो ऐसा चाहते हैं कि नहीं पहले हम अपना एप्लीकेशन बना ले, एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी पे ध्यान देते, यूजर एक्सपीरियंस पे ध्यान देते, and we give more priority to our features. And abhi bhi 90% of the developers are missing out on security. They do not consider the security as a part of a development life cycle, but they consider that security is the last thing. यानी कि आपने एप्लीकेशन ला दिया, हाँ मेरे क्लाइंट ने बोला कि अरे मुझे ऑडिट करवानी पड़ेगी अपनी वेबसाइट की, तो मैं एक बार ऑडिट करवा लेता हूँ. बट जब आप ऑडिट करवाते हो, आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं, लूपहोल्स मिलते हैं, बट द बेस इटसेल्फ डज नॉट हैव अ सिक्योरिटी. आप कितने भी चीजें ट्राई कर लो, इट विल नॉट बी सिक्योर. सो इतने सारे डेटा ब्रीचेस क्यों होते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी माइंडसेट उनका मैं मानता हूँ है ही नहीं, राइट? या तो बहुत ही कम है. और सिक्योरिटी को बहुत बार लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि एक बार मेरा क्यूए टेस्ट हो गया, फीचर टेस्ट हो गया, लोड टेस्ट हो गया, अब सिक्योरिटी टेस्टिंग. बट जब आप प्रोडक्ट के आइडिएशन से बात कर रहे हो कि मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट बनने वाली है, अगर तब से सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी जाए ना, तो मान वी आई प्रॉमिस यू के 99.99% ऑफ द वेबसाइट्स या तो एप्लीकेशंस होगी ना, वो हैक नहीं होगी, राइट? और वो हैक करना विल बी इम्पॉसिबल ऑन दिस, राइट? So that is the reason the data breaches are increasing. अगर if you ask me कि what steps you should take to secure your data, तो पहले तो बहुत सारी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन जरूरत है नहीं है, पर हम लोग क्या करते, कुछ भी मैसेज आ गया, हमने लिंक ओपन कर लिया, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, क्रिएट अकाउंट, तो ये सारा चीज बंद कर दो. नंबर 1. नंबर 2 के अगर आपको चेक करना है कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है, तो गो टू अ वेरी सिंपल वेबसाइट, haveibeenpawned.com. So when you go to haveibeenpawned.com and put your email ID, आपको पता चलेगा कि कितनी वेबसाइट पे आपने अकाउंट बनाया था, वो वेबसाइट हैक हुई है, उनका डेटा या तो सरफेस वेब पे या तो डार्क वेब या डीप वेब पे पड़ा है, और उसमें आपका आईडी पासवर्ड भी है. So that is something which is very important. Third is a very simple tip that I can give. Don't use the same passwords everywhere. यानी कि वो सेम पासवर्ड चलता रहता है सालों से, या तो लोगों के पास 4 ऐसे पासवर्ड होते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं. अब मानो डार्क वेब, डीप वेब पे चारों पासवर्ड मिल गए मुझे, राइट? और ऐसे सॉफ्टवेयर है कि अगर मैं आपका ईमेल आईडी डालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आपकी ऐसी 10 वेबसाइट पे अकाउंट हैक हुआ है, और 10 वेबसाइट पे मानवी का ये वेबसाइट पे पासवर्ड ये था, ये वेबसाइट पे ये था, ये वेबसाइट पे ये. तो अल्टीमेटली वो जो मानवी की थॉट प्रोसेस है ना, वो मुझे पता चल जाती है कि मानवी यही पासवर्ड यूज करे, राइट? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज to developers or the community that security should be an integral part of the design, right? Or security by design is a right way of security, but security after design is not a right way of the security. And security by ops security will also not work. यानी कई बार ऐसा होता है, इतनी सिक्योरिटी कर देते हैं ना कि ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, but that is not work, right? क्योंकि आपका बेसिक कच्चा है, so you cannot secure your applications. So that, as you have said कि हम एक ही पासवर्ड जो है हर जगह यूज करते हैं. So I guess इसके बाद में जाके अपनी हर ईमेल आईडी, हर उसका पासवर्ड I'll surely change, because yeah, it's a pattern of mine कि मैं एक ही पासवर्ड हर जगह चला रही हूँ.
numbers change कर दिए, थोड़ा आगे पीछे कर दिया, but that password remains the same, उसी में variations है. And yeah, in one of your interview on YouTube, I have seen that आपने एक करके दिखाया था कि email ID डाल के कि where she has कहाँ कहाँ पे उन्होंने email IDs अपनी डाली हैं, and Domino's या Zomato, Swiggy, इन सब पे वो visit करी हैं उन्होंने, and उनका डेटा उस पे है, रिस्क पे है, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी रिस्क पे है, तो इसलिए हम उस पे वहां जा रहे हैं, तो हमारा डेटा भी रिस्क पे है. Correct. Thank you so much, sir, for this. Sir, as the digital landscape is changing, so what are the latest cybersecurity threats that currently we are facing? Latest and evolving क्या मतलब in future, और क्या ऐसे threats हैं जो आ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, या हमारे डेटा को लेके, या अगर हम उसको कुछ प्रिकॉशंस ले तो कैसे वी कैन जस्ट जितने अभी हैं उतना ही वो डेटा ब्रीच रहे, बढ़े ना. तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, अभी जो सबसे इंडिविजुअल को मान लो या बिजनेसेस को मान लो, इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज अ रैंसमवेयर, राइट. एंड रैंसमवेयर, अब वो खाली रैंसमवेयर नहीं रह गया, इट इज लाइक अ रैंसमवेयर एज अ सर्विस. Interestingly, you can actually recruit a bad guy, pay him some $50, and उनको टारगेट दो कि मानवी का कंप्यूटर और मानवी की XYZ कंपनी है, उनको मुझे हैक करना है. And just for the sake of that $50 to $500 bounty or a $1,000 bounty, that person will put this message into community. And that bad community guys will target you or your company or your people. So ransomware as a service is one of the biggest challenge nowadays. So companies are being targeted, right? And ransomware में होता क्या है कि the virus comes to your computer or a malware comes to your computer, और आपके कंप्यूटर में कोई vulnerability या तो कोई loophole है उसको exploit करता है, and it actually corrupt all your data and changes into an extension of a hacker. And what you see end of this attack is a simple, the banner on your desktop that, Manvi, please pay $500 into a Bitcoin into this address. And the moment you pay $500, then only we'll give you your data. But paying $500 is also not, a right option, because there's no guarantee that you get your data back. So ransomware is one of the biggest challenge, right? But ये ransomware होता है ना, तभी उसके पीछे दो और अटैक होते हैं. That is known as either phishing या तो social engineering. और social engineering, phishing, ये दोनों साथ में होता है. The meaning of social engineering and phishing is कि कोई आपको मेल भेजेगा और आपको बोलेगा कि यहाँ पे क्लिक कर लो, आप ये डाउनलोड कर दो और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर. So what they are trying to do is they're trying to convince you for something. They're trying to convince you to click on something. They try to convince you to download some untrusted software or the applications from the untrusted website. But you don't need to get convinced. Third चीज के convince क्यों होते हैं? क्योंकि people get some lucrative offer. Hey, you'll be surprised. जब ये आया तो बहुत सारे लोग मुझे विश तो कर रहे थे, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने, ऐसे अननोन लोगों ने मुझे मैसेज किया saying that कि सनी, every day in the morning I get a message from GoIBO कि 100 rupees आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं because सनी वाघेला has completed it. Now imagine कि मेरा तो मैं GoIBO यूज ही नहीं करता हूँ. It's been years that I'm not using it. So that means because people are using the name, sending messages to so many people across my the other connections or anybody, क्योंकि कोई अननोन आके बोलेगा कि अरे मुझे GoIBO का मैसेज आ रहा है because we completed it. मैंने बोला I don't know you, you don't know me. How come you getting message from GoIBO? और उसमें एक लिंक होता है, and the link will redirect you to some website and asking you to download something. कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको 100 रुपीज मिलेंगे. Now in my name or in anybody's name, nowadays, which are very trusted names, in the industry, people have started doing such sort of social engineering. वो आपको convince करते हैं to download something. So never ever, follow this sort of, the links or click on those particular links. So अगर आपने छोटी-छोटी चीजें की क्लिक नहीं करना है, डाउनलोड नहीं करना है कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट से, और कन्विंस नहीं होना है, और लाइफ में एक चीज समझ लो, नथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री. The moment you get something for free, you are paying a very high cost of that, and the cost is your data.
The cost is compromising your identity on the internet, compromising your email ID, compromising your systems as well. So that's all I want to say, that, be safe and click, think before you go. Sir, क्योंकि actually two times back, years back or months back, there was a one message that was being circulated in everyone for everyone through SMS. Ki, okay, there was my college name, Sri Aurobindo College, and many people, are viewing this or doing this. So click on a link below. And one of my friend actually clicked on that link. So that's all that was what's happening is not just on the name of few famous personalities, but yeah, if anyone know about the college as well, and we are we just got some manage हो जाते हैं हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ कोई ट्रस्ट वर्दी ही होगा ऐसे मैसेज आ रहा है हमारे को but yeah we should never ever click on that link. And there was one case I was reading that Instagram की side से we are getting an email that your account has been restricted or blocked or report and do this steps so that आप अपना account जो है revive कर सकते हो. So ऐसे भी things जो है ट्रेंड में है जो भी चल रही है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड. So yeah, there is a very high risk of data there, and Yeah. yeah, we need to be clear about कि ये सब fake है and people should know about this because many people are not aware about these kind of threats and data breaches and all. So I hope after this conversation and when they'll see this podcast, this valuable podcast, they'll genuinely they'll get to know about a lot about AI, cybersecurity, and how they should अपना data कैसे उनको save करना चाहिए. Because going on government ki government will take some steps for cyber security, no, हम उन पे rely करते करते हम अपने end से we don't take any steps. Yeah, right. Correct, So correct. yeah, So it's like what you pointed out is very right. See, self-awareness is the only key when you really want to get secured on the digital space, right? And then nowadays even government is taking a lot of steps, right? So we have a portal to report the crimes. We have a lot of awareness sessions run by the government, run by a lot of other private agencies as well. So make yourself aware, see those videos. I'm sure that would actually help you what to do, what not to do on the internet. Yeah. Sir, looking ahead, how do you envision the future of cybersecurity? Are there any upcoming trends or technologies that excite you? Absolutely. So here, because I'm running two companies, one is completely dealing into a Web 2, and second is completely dealing into a Web 3 with the cybersecurity. So I would say that the next thing in the cybersecurity is going to be a zero trust, the architecture. So that's something which nowadays everybody's talking about, and a zero trust approach in the cybersecurity is very important. I think AI will play a very vital role for an organizations to, take some decisions, the predict decisions on, what roadmap that they should follow. वो अपने organization में और क्या-क्या कर सकते हैं, right? So not on a technical side of the roadmap, but I would say that AI will play a role in cybersecurity to give a very strategic roadmap, on the cybersecurity as well, right? The is साइबर सिक्योरिटी में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो अभी आ रहा है और जो कैटेगरी अभी हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देख के साइबर सिक्योरिटी में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं देयर आर कमिंग प्रोडक्ट और आई वुड से दैट दे विल बी कमिंग इन द फ्यूचर वेयर यू कैन एक्चुअली क्वांटिफाई योर रिस्क. आप बता सकते हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क कितना है, राइट? क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि व्हेन यू सेड योर टॉप मैनेजमेंट एंड एनी ऑफ द एंटरप्राइजेस कि हमें साइबर में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दे सेड दैट नो 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 इसकी जरूरत नहीं है, हमें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे पे कहाँ अटैक हुआ है. तो मैं मानता हूँ कि व्हेन यू हैव दैट क्वांटिफिकेशन ऑफ कि क्या हो सकता है, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, उसको ऑब्जर्व करके व्हेन यू क्वांटिफाई समथिंग यू कैन एबल टू put the right set of investment into the cybersecurity as well. So that is also something which is coming up in a very big way nowadays in the cybersecurity. And the most important is
what TechDefence is actually doing. So Zyber is into Web3, so it will focus on that Web3. But even TechDefence is also now diversifying from a service company to a product company. And to let you know that we are creating a kind of a super app. So like if you look at a Zoho, right, you get so many things, right? You get CRM, you get invoice, you get books, you get everything. So we are also becoming, more like a one shop, or for all the cybersecurity product under our super app banner. So and I'm sure that the super app will help a lot of SMEs, customers who wants to get everything and anything in the cybersecurity, and that would help them to get all the products at a one place. So जो consolidation जो है जो cyber security पे जो अभी जो next the big thing है कि आपके पास 50 प्रोडक्ट है बट आपके पास 50 प्रोडक्ट को देखने का समय नहीं है, आपके पास 50 प्रोडक्ट को हैंडल करने का समय नहीं, तो यू हैव टू कंसोलिडेट ऑल दैट डेटा एंड गेट सम इंटेलिजेंस आउटपुट आउट ऑफ इट. सो दैट्स ऑल the product that we are working on, and will be able to help a lot of customers to get some insights on what can happen, what will happen, and how they can actually secure it right now. Thank you so much for answering it so well. Sir, if you have the opportunity to give one advice to the youth of today, so what would it be? I just want to say that मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको मैं कई बार सेमिनार्स में भी जाता हूँ तो कहता हूँ कि अब जब ना इंजीनियरिंग अपना खत्म कर लेते हो, अपना ग्रेजुएशन खत्म कर लेते हो, तो आपका 90% 70% ऑफ द टाइम जो होता है, जब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, राइट, या तो 8 बजे तक आपका टाइम होता है, या तो आपकी ऑफिस में बीट यू आर वर्किंग somewhere as an employee or you become an employer, right? Ultimately you are working, either way you've been spending almost like out of 24 hours almost 12 to 15 hours of the time you know just thinking about कि आपकी लाइफ में आपको ये काम करना है या तो आपको ये करना है, ये करना है, to make your life more happier, because end of the day we do everything for our own happiness, right? Make sure that follow your passion. अगर आपको अपना passion नहीं मिल रहा है, ठीक है, work somewhere, but while working somewhere also find your passion, right? Because moving forward, the thing that will make you happy is your right professional life, right? And अगर आप वहाँ पे happy हो तो मैं मानता हूँ कि आप happy रहोगे, right? So follow your passion, find your passion, that is more important. अब कई बार लोग बोलते हैं कि सनी आई हैव एन आइडिया बट मेरे पास नॉलेज नहीं है इसको बनाने का, बट आई ऑलवेज टेल देम दैट imagination is more powerful than the knowledge. If you could imagine that this can be developed or this can be done, right? Knowledge can be outsourced, right? So that means you have so many knowledgeable people, in your network, right? Who has a knowledge, right? But your imagination is actually going to, make you apart or make you different than other people, in the same community. So that is more important. Third thing is, अगर कोई entrepreneur बनना चाहता है तो उनको बहुत simple है कि either follow the same way what everybody is following, or you take a responsibility to change that way or change that direction. So you keep that responsibility on you that मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अलग दिशा में जाना है, मुझे कुछ अलग तरीके से करना है. I want to create some difference in the world. And last but not the least is end of the day, आप जब इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल निकाल लोगे, आप वर्क कर रहे हो या तो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, your network is very important, right? And I always say that your network will be your net worth. So create that network, right? And अगर आपने वो create किया अपना network, trust me, right? In any of the field that you are, but if you created that network, I'm sure that your net worth will definitely increase. So that's all I want to say that. And अगर आपको कोई failure आता है, मतलब last but not the least, but कोई failure आता है ना, तो take that as a stepping stone. कि यार ये तो failure था, ठीक है. I would again learn, from those failure, and again I would grow on that particular year. And entrepreneurship वैसे तो कहा जाता है कि नहीं co-founder होते हैं, CTO होता है, बड़ी टीम होती है, ये होता है, वो होता है.
But अगर आप किसी भी founder को पूछो, not me, anybody else, they say that it's a very lonely journey. क्योंकि end of the day आप अपने आप से ही एक fight में होते हो. So you have to keep that fight on with you until you reach that destination. So that's all I want to say, to the budding entrepreneurs or to the youth. Thank you so much, sir. Once again, thank you so much, sir, for joining us today and sharing your valuable experience with us. I've learned a lot about AI, cybersecurity, what we should do, and of course, I'll take your advice into my consideration. I'll change all my, Okay. past. Yeah, sure, sir. I'll pass it, and I hope our listeners will also gain some valuable insights from this amazing podcast. I'm not having that particular word to describe this podcast because it was wholesome. Seriously, sir, it was very interesting to know about you, your journey, cybersecurity, threats, and what we should do at our part, and what you can, you can tell us if someone will approach you. Yeah. Very interesting to know. Thank you so much, sir. Thank you, Manvi, and thank you, Aurobindo College, for inviting this. Right, and it was very interesting conversation with you, Manvi. You are a very good, orator. I would say that. Thank you. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you.